हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग और सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन चेक कर लेते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक कैलेंडर में जाना है आपको और चेक करना है कि इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या डिसीजन लिया है। नॉर्मली इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है वो एज पर एक्सपेक्टेशन ही होता है। इंटरेस्ट रेट का फोरकास्ट था 2.15%, यानी कि एक्सपेक्टेशन था कि इस बार इंटरेस्ट रेट में 0.25% का एक कट होगा, जो कि एक हुआ है, और एक्चुअल डिसीजन भी आया है 2.15% बराबर, यानी कि यूरो में इंटरेस्ट रेट में एक कट हुआ है और इंटरेस्ट रेट 2.15% हो गया है। ठीक है, तो इट इज एज पर एक्सपेक्टेशन जो यूजुअली रहता है। तो जब एज पर एक्सपेक्टेशन होता है तो उसमें कुछ खास मार्केट में कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है, फ्लक्चुएशन क्रिएट नहीं करता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे। 6:15 को यूरोप की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है। यूरोप की गवर्नर का नाम है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की गवर्नर का नाम है क्रिस्टीन लगार्ड, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रही है। सो आई होप कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख रही है। Participating online, so when I give him the floor, please turn on your camera and your microphone. And with that, I hand over to President Lagarde, please. Thank you very much. Good afternoon to all of you present, and good day to all those who are online from somewhere in the world. The Vice President and I welcome you to our press conference. And the Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate, the decision to lower the deposit rate, the rate through which the monetary policy stance is based on our updated assessment of inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. Inflation is currently at around our 2% medium-term target. In the baseline of the new
Eurosystem staff projections, headline inflation is set to average 2% in 2025, 1.6% in 2026, and 2% in 2027. The downward revisions, compared with the March projections by 0.3 percentage point for both 25 and 26, mainly reflect lower assumptions for energy prices and a stronger euro. Staff expects inflation exclude. ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट क्या है कि उन्होंने इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को डाउनवर्ड रिवाइज किया है, जो कि एक थोड़ा सा energy and food to average 2.4% in 25 and 1.9% in both 26 and 27, broadly unchanged since March. Staff see real GDP growth averaging 0.9% in 25, 1.1% in 26, and 1.3% in 27. The unrevised growth projection for 2025 reflects a stronger than expected first quarter, combined with weaker prospects for the remainder of the year. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर है, लेकिन बाकी के जो क्वार्टर्स है उसके लिए थोड़ा वीक रहेगा. ठीक है, तो अगेन इट्स अ डोविश स्टेटमेंट. While the uncertainty surrounding trade policies is expected to weigh on business investment and exports, especially in the short term, rising government investment in defense and infrastructure will increasingly support growth over the medium term. Higher real incomes and a robust labor market will allow households to spend more. Together with more favorable financing conditions, this should make the economy more resilient to global shocks. In the context of high uncertainty, staff also assessed some of the mechanisms by which different trade policies could affect growth and inflation under some alternative illustrative scenarios. These scenarios will be published with the staff projections on our website. Under this scenario analysis, a further escalation of trade tensions over the coming months would result in growth and inflation being below the baseline projections. By contrast, if trade tensions were resolved with a benign outcome, growth and to a lesser extent inflation would be higher in the baseline projections. Most measures of underlying inflation suggest that inflation will settle at around our 2% medium-term target on a sustained basis. Wage growth is still elevated, but continues to moderate visibly, and profits are partially buffering its impact on inflation. The concerns that increased uncertainty and a volatile market response to the trade tension in April would have a tightening impact on financing conditions have eased. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. Especially in current conditions of exceptional uncertainty, we will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. Our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. The decisions taken today are set out in a press release that is available on our website. So I will now outline and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. The economy grew by 0.3% in the first quarter of 2025, according to Eurostat's flash estimate.
Unemployment at 6.2% in April is at its lowest level since the launch of the euro, and employment grew by 0.3% in the first quarter of the year, according to the flash estimate. In line with the staff projections, survey data point overall to some weaker prospects in the near term. While manufacturing as Survey prospects point to weaker prospects, weaker prospects in near term, बराबर, यानी कि एक नेगेटिव सेंटेंस है कि आगे जाते हुए थोड़ी वीकनेस रह सकती है in the economy. strengthened, Dovish partly because trade has been brought forward in anticipation of higher tariff. The more domestically oriented services sector is slowing. Higher tariffs and a stronger euro are expected to make it harder for firms to export. High uncertainty is expected to weigh on investment, but at the same time, several factors are keeping the economy resilient and should support growth over the medium term. A strong labor market, rising real incomes, robust private sector balance sheets, and easier financing conditions, in part because of our past interest rate cuts, should all help consumers and firms withstand the fallout from a volatile global environment. Recently announced measures to step up defense and infrastructure investment should also bolster growth. In the present geopolitical environment, it is even more urgent for fiscal and structural policies to make the euro area economy more productive, more competitive, and more resilient. The European Commission's Competitiveness Compass provides a concrete roadmap for action swiftly adopted. This includes completing the savings and investment. It is also important to rapidly establish the legislative framework to prepare the ground for governments to ensure sustainable public funding while prioritizing essential growth-enhancing structural reforms and strategic investment. Looking at inflation, annual inflation declined to 1.9% in May, from 2.2% in April, according to Eurostat's flash estimates. Energy price inflation remained at minus 3.6%. Food price inflation rose to 3.3%, from 3% the month before. Goods inflation was unchanged at 0.6%, while services inflation dropped to 3.2% from 4% in April. Services inflation had jumped in April mainly because prices for travel services around the Easter holidays went up by more than expected. Most indicators of underlying inflation suggest that inflation will stabilize, sustain. Labor costs are gradually moderating, as indicated by incoming data. Labor costs are 2% median, as indicated by incoming data on negotiated wages and available country data on compensation per employee. The ECB's wage tracker points to a further easing of negotiated wage growth in 2025, while the staff projections see wage growth for below 3% in 2026 and 2027. देखो वेज ग्रोथ कम होगा ऐसा बोल रहे हैं. वेज ग्रोथ कम होता है तो लोगों की इनकम कम होती है, इनकम कम होती है तो ऑब्वियसली स्पेंडिंग कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो करेंसी वीक होगी. While lower energy prices and a stronger euro are putting downward pressure on inflation in the near term, inflation is expected to return to target in 2027. Short-term consumer inflation expectations edged up in April, likely reflecting news about trade tensions.
But most measures of longer-term inflation expectations continue to stand at around 2%, which supports the stabilization of inflation around our target. Turning now to our risk assessment. Risks to economic growth remain tilted to the downside. Risks to economic growth tilted to downside, मतलब कि risk जो है वो नीचे की तरफ है. Dovish statement. Further escalation in global trade tensions and associated uncertainties could lower euro area growth by dampening exports and dragging down investment and consumption. A deterioration in financial market sentiment could lead to tighter financing conditions and greater risk aversion, and make firms and households less willing to invest and consume. Clearly dovish statements. Geopolitical tensions, such as Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East, remain a major source of uncertainty. By contrast, if trade and geopolitical tensions were resolved swiftly, this could lift sentiment and spur activity. A further increase in defense and infrastructure spending, together with productivity-enhancing reforms, would also add to growth. अगर प्रोडक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के रिलेटेड स्टेप्स लिए गए तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बन सकता है और यूरो एरिया का ग्रोथ बढ़ सकता है, तो ये एक हॉकी स्टेटमेंट. The outlook for euro area inflation is more uncertain than usual. As a result of the volatile global trade policy environment, falling energy prices and a stronger euro could put further downward pressure on inflation. This could be reinforced if higher tariffs led to lower demand for euro area exports and to countries with overcapacity rerouting their exports to the euro area. Trade tensions could lead to greater volatility and risk aversion in financial markets, which would weigh on domestic demand and would thereby also lower inflation. By contrast, a fragmentation of global supply chains could raise inflation by pushing up import prices and adding to capacity constraints in the domestic economy. A boost in defense and infrastructure spending could also raise inflation over the medium term. Extreme weather events and the unfolding climate crisis more broadly could drive up food prices by more than expected. Let's look at the financial and monetary conditions. Risk-free interest rates have remained broadly unchanged since our last meeting. Equity prices have risen, and corporate bond spreads have narrowed in response to more positive news about global trade policies and the improvement in global risk sentiment. Our past interest rate cuts continue to make corporate borrowing less expensive. The average interest rate on new loans to firms declined to 3.8% from 3.9% in March. The cost of issuing market-based debt was unchanged at 3.7%. Bank lending to firms continued to strengthen gradually, growing by an annual rate of 2.6% in April after 2.4% in March, while corporate bond issuance was subdued. The average interest rate on new mortgages stayed at 3.3% in April, while growth in mortgage lending increased to 1.9%. In line with our monetary policy strategy, the Governing Council thoroughly assessed the links between monetary policy and financial stability. While euro area banks remain resilient, broader financial stability risks remain elevated, in particular owing to highly uncertain and volatile global trade policies.
Macroprudential policy remains the first line of defense against the buildup of financial vulnerabilities. Enhancing resilience and preserving macroprudential aid decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and to ensure that inflation stabilizes, especially in current conditions of exceptional uncertainty. We will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. Our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. And in any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation stabilizes sustainably at our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We are now ready to take your questions. And the first question goes to Mark Schwartz of Bloomberg. Mark, please. Yes, thanks a lot for taking the questions. The first one is on rates. Has anyone today advocated either pausing rate cuts or cutting by bigger 50 basis points? Or would you say that after today's rate cut to 2%, a pause at the next meeting in July would make sense, also to wait for new projections in September? And the other one is not on the future of rates, but on your own future, where founder Klaus Schwab had said that you discussed leaving the ECB before the end of your term to lead the World Economic Forum. I know the ECB stated your determination to stay, but without an outright denial of these talks. So have these talks taken place or not, and have you contemplated leaving the ECB early? Thank you. Thank you for your two questions, and I'll start with the first one, which is really the order of business and the main topic today. So we cut interest rates by 25 basis points. And with today's cut at the current level of interest rates, we believe that we are in a good position to navigate the uncertain conditions that will be coming up. So we are well positioned to navigate those circumstances. I can also tell you that it was an almost unanimous decision. There was one governing council member who did not support the decision, but other than that, it was virtually unanimous. So I would call it either very broad consensus or virtually unanimous support for the decision to cut by 25 basis points. And obviously, we analyzed the situation in the light of the three criteria that you know well, because they are repeated several times in the monetary policy statement and have not varied for a number of meetings now. But under those three criteria, really the situation points towards inflation settling at our 2% targets. We can come back to the path, but this is what we are seeing, and that is what has predicated the cut that we made today. Now, you asked me about my future, which is far less important than the future of the economy and the future of our monetary policy, rest assured. But I can very determined to deliver on my mission. But I regret to tell you that you're not about to see the back of me. Next question goes to Annette. Hi, President Lagarde. I have a question. When I read through the communique today, I have the feeling that you're quite confident on the economy despite all the uncertainties. So is that a right assessment? And at the same time, you're also quite confident that inflation is under control. So does that bring me to the right conclusion that we're almost done when it comes to rate cutting? And then a question on your thinking about the boost from the fiscal space, because clearly it will take time
until we'll see that materializing on the economy and also probably on inflation. So just to also understand, why are you so confident that this is actually supporting the economy also in the shorter term, despite all the uncertainties? Thank you. Well, thank you so much for your question. We have hardly revised our growth numbers. So the only year where we have slightly revised is 2026, and by 0.1%. So we have confirmed our projected growth rate as per our projection of last March at 0.9% for 2025. And that was certainly reinforced by the number we had for Q1. So I mentioned the 0.3 Q1 number, which was, as you know, revised from an initial 0.4. I would not exclude that there be further revision of that number on the upside. Now, this is attributable to multiple factors. It's improved consumption, it's improved investment, but more importantly, it's the buildup of inventory or anticipated purchases and therefore sales in fear and anticipation of the tariffs. So that Q1 is, of course, very peculiar, very particular, more than peculiar, and is clearly giving momentum to the growth that we are seeing and anticipating for 2025. But again, I would not exclude that number of 0.3 be revised upward, given the volume that we are seeing being traded out of some countries in particular. But we are not revising 27, and we are very marginally revising 2026 because there is a carryover, number one, and because we believe that the impact of tariff, if and when they materialize, on the export that we have towards the United States, which I remind you is only 17% of our total exports outside from the Euro area and European countries, will impact predominantly on 26 and will then be significantly offset by the expected investment in both military equipment and construction, or infrastructure, if you will, particularly out of some countries. So our assessment is that will have a bearing on 27 predominantly, some on in 26, but predominantly in 27. So you have this offset between the two. So are we confident? I think that would be far-fetched, because we are in a good place. As I said, I think we are well positioned as you know, after that 25 basis point rate cut and with the rate path as it is, we are in a good place. We will face uncertainty. We do not know what the outcome of the negotiations will be between the various partners. We don't know the level of retaliation that might be decided, which incidentally is not included in our baseline, as you will see published later on. And as a result, we have to be prepared, and we will be assessing meeting by meeting data as they come in. But you know, as I said again, we are well positioned at the moment, and the path of inflation that we see certainly returns to 2% in 2027. So we start from a place where we have inflation for 2025 at 2%. It goes below target in 26 for reasons that have predominantly to do with the price of energy and the value of the euro. Because as you know, it's based on our current assumption of those prices now. And that's what explains these numbers. तो सी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से वो आज की पॉलिसी को ऑलमोस्ट डिफाइन कर सकता है, वैसा क्वेश्चन था. उसका क्वेश्चन ये था कि आप कब से बोल रहे हो कि डाउनवर्ड रिवीजन है ग्रोथ में या फिर इसमें इन्फ्लेशन में, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो. सो इज इट दैट कि आप ये बोल रहे हो लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो कि या इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में भी आप कॉन्फिडेंट हो?
तो एकदम सीधा सवाल, जो प्रॉपर क्वेश्चन जो चाहिए, जो जवाब निकलवाने के लिए एकदम प्रॉपर क्वेश्चन था, और उसका आंसर भी सही से दिया। देखो क्या होता है ना, नॉर्मली जब नेगेटिव बातें होती है तो बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो जाती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज देखें तो बॉडी लैंग्वेज एकदम कंफर्टेबल है कि भाई ठीक है डाउनवर्ड होने वाला है, लेकिन कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज है। तो कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज क्यों है आपकी? क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि आगे जाते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी? ठीक है, तो इन्होंने जो जवाब दिया है कि कॉन्फिडेंट वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन हम वेल पोजिशन्ड है, यानी कि कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा उनकी बातों से क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से आज की पॉलिसी को काफी हद तक डिफाइन करने वाला स्टेटमेंट है। फिर भी आगे हम थोड़े क्वेश्चन आंसर सुनेंगे क्योंकि दो ही सवाल हुए हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो सिग्निफिकेंटली हॉकिश है। मतलब अब तक जो स्टेटमेंट आए थे, डोविश स्टेटमेंट्स, उन सब की इफेक्ट को एक बार आप साइड में रखो तो ये सिग्निफिकेंटली हॉकिश स्टेटमेंट था मेरे हिसाब से। Next question, Francesco Fenech of Reuters. Francesco, please. Thank you very much. Good afternoon. Good afternoon. So you said that the current level of rates leaves you in a good position. Are we to understand that? अभी सवाल उसके ऊपर ही स्टार्ट हो गए क्योंकि समझ में आ गया कि पकड़ में आ गए। It's an indication that you are done cutting interest rates, or if I can rephrase the question in another way, what would you need to see for you to cut rates again? Again, we are in a good position, and we are in a good position on the basis of the current rate path and with the 25 basis point cuts that we decided, so that we can face the uncertainties that are coming our way. But as you have heard in the monetary policy statement, we will decide meeting by meeting on the basis of data. And we will assess, as and when data come in, whether or not that position is secure in order to deliver on our 2% medium-term target. What I'm saying today is that we are in that good position. Next question to Ulf Kasulek of BFM Business. ये वाला जो स्टेटमेंट ना, वी आर इन अ गुड पोजीशन, ये एक हाईलाइट है पॉलिसी का आज का। Taking my question. First question, would you say the monetary stance has now shifted to neutral, or is it still restrictive, even slightly? And the second question, some countries are facing higher debt and may struggle to attract investors. At what point does that become a concern for the ECB in terms of policy transmission and financial stability? Thank you. Well, thank you for your two questions. We have not discussed this wonderful concept of the neutral rate on the occasion of this meeting. And I think that we all know well that as we are getting closer to that zone, we need to be particularly attentive. We need to be confident in our resolve to deliver with the appropriate monetary policy our medium-term 2% target. But we have not discussed that neutral rate. And I alluded to that at our last press conference. You know, the neutral rate is predicated on the absence of shock. Great equilibrium, no shock. Well, I wish there was no shock. But we have just nearly concluded a cycle of monetary policy. सवाल ये है कि क्या आपके मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस रिस्ट्रिक्टिव है या न्यूट्रल है? तो देखो, जब न्यूट्रल स्टैंस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट दोनों तरफ जा सकते हैं। जब रिस्ट्रिक्टिव स्टैंस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट मेनली नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि अभी न्यूट्रल स्टैंस हमने डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब कि अभी रिस्ट्रिक्टिव स्टैंस ही चल रहा है, तो आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे ही जाएंगे, जो भी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी Policy that dealt with a series of shocks. And I think we have done that decently well. Inflation is at target 2% medium term. We are currently around 2%. Expectations are well anchored around 2%. And those elements that I told you repeatedly over the few last conferences was of concern to us, namely inflation on services, evolution of wages, evolution of profit,
those three elements are coming really in line with what our projections were in order to deliver on our 2% medium-term target. For the moment, we are facing significant uncertainty. You will read in the material, in the monetary balance, there is plenty of that. And clearly we are trying to improve our game as much as we can in order to anticipate, measure, caliber, but it's proving obviously quite difficult. And that's the reason you will be not only receiving our projection exercise, but also the scenarios which encapsulate some of the channels of transmission. In particular, I would mention one that we discussed quite extensively during the Governing Council, the disruption of the supply chain. That is not included in any of our scenarios. And the next question goes to Svein Ilyan of the Bulgarian newswire BTR. Welcome. Thank you. I hope all your colleagues are... According to the ECB, convergence report published Wednesday, Bulgaria is ready to join the Eurozone on January 1st next year. What do you expect to be the effects of Bulgaria's accession to the Euro area, and will the currency zone be stronger with a widely new member state? So first of all, I would like to congratulate Bulgaria, the Bulgarian people, and welcome them. This is not yet a complete decision-making process because, as you know, while the Commission and us have validated under the convergence report that the criteria are met, the European Council still has to approve. So I don't want to prejudge that Bulgaria will become our 21st member around the table. And we are delighted that the circle gets larger, and we will be looking forward to the Bulgarian contributions, both in terms of intellectual input, economic analysis. As soon as the decision is final with the European Council, as your representative, advocating properly, and so that we can also, Bulgarian people, will validity of the currency that we have, the euro area, the solidity of the currency that we have. Some of you have probably noticed that the supportive now at 83% has gone up and is now at 83 regular basis. 83% actually value and appreciate the euro as their currency. So I hope we can together do everything we can so that Bulgarians can also appreciate the value and the shield impact that the euro constitutes for new members. And the next question goes to Stefan Rekius of Handelsblatt. Stefan, please. Thank you very much for the floor. First question is, some analysts have entertained the idea that you could skip July to make a concession to those governing council members who have already become reluctant to cut rates further. Could you walk us through today's deliberations in this light? And my second question is, you have been reluctant to declare victory over inflation for quite some time. So is this the right time for a victory lap? And if not, why? Yeah, victory laps are always nice, but there is always another battle. So, as I said, I think that with today's cut and the current level of interest rates, number one, I think we are getting to the end of a monetary policy cycle that was responding to compounded shocks, including COVID, including the war in Ukraine. ऐसा बोला है कि we are getting closer to the end of compounding cycle, interest rate cycle, ठीक है? तो ये जो कोविड की वजह से जो भी एक पूरा इन्फ्लेशन का
चालू हुआ था स्पाइरल, उसके एंड के करीब पहुंच रहे हैं, यानी कि यहाँ से आगे जाते हुए कट कम हो सकते हैं. Illegitimate war in Hawkish Ukraine statement. and the two different partners, and you should not doubt for a second our determination to deliver. And Ron? मेरे ख्याल से पॉलिसी का काफी हद तक तो I suggest to me used on this concept of the direction of travel, which you earlier used in this rate cycle. Your today's remarks suggest to me that the direction of travel now probably is more a sideways movement rather than kind of downwards as it was by the end of the year. Would that be the right takeaway from your today's remarks? And my second question again is on these remarks by Klaus Schwab of the World Economic Forum. Some people suggest that the disclosure that you considered leaving the ECB early could The reason I used the direction of travel concept was when we were really at a distance from our medium-term 2% target. So to talk about the direction of travel, when we have our medium-term 2% target in sight, sustainably so, when underlying inflation is not budging. So for those in doubt, headline inflation in 2026 is clearly oil and gas and the value of the euro, which we assess at the time when we cut off the period when we do our when staff does its assessment. And underlying inflation, core inflation, this is hardly moving, and it's at around our target. So there's no point talking about the direction of travel. There's no point talking about sideways. What I'm saying is that we will be determined to deliver that 2% medium-term target. We will be looking at all data that come in. That's it. आइए कभी इसको समराइज करेंगे हम. एक लास्ट सवाल पूछ लेते हैं, सुन लेते I have हैं. two questions. One is on APP and PEP, in the sense that the ECB no longer reinvests the principal. ठीक है, तो इसको अभी समराइज करते हैं. मेरे ख्याल से स्टेटमेंट आ गए. जो देखो इनिशियल सारे स्टेटमेंट्स डॉविश थे, लेकिन फाइनली जो बीच में एक जो सवाल आया, वो सीधा सवाल, उससे आई थिंक बहुत क्लियर हो गया है कि आज की पॉलिसी जो है वो हॉकिश पॉलिसी है. क्यों हॉकिश पॉलिसी है? क्योंकि जो भी डायरेक्शन की बात हो रही थी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो अभी साइडवेज में कन्वर्ट हो रही है. भले एक्सेप्ट ना करे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली विजिबल है. कॉन्फिडेंट की बात की, ग्रोथ एरिया, ग्रोथ जीडीपी की बात की, सारे सिचुएशन, सारे जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी जो है वो मेरे हिसाब से तो हॉकिश है. ठीक है, सो मैं इसको हॉकिश पॉलिसी कंक्लूड करूंगा. एंड यस, सो दिस इज हॉकिश पॉलिसी. अब जाएंगे हम हमारा सेकंड स्टेप, यानी कि सेंटिमेंट के ऊपर. सो हॉकिश का मतलब क्या होता है? हॉकिश का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होना, इंटरेस्ट रेट को ऊपर की तरफ मेंटेन करने की कोशिश करना, यानी कि करेंसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए. सो यूरो यूएसडी में आपको लॉन्ग ट्रेड, बाय का ट्रेड लेना चाहिए. दिस इज द समरी ऑफ दिस पॉलिसी. अब बात करते हैं सेकंड स्टेप, यानी कि सेंटिमेंटल एनालिसिस. सो सेंटिमेंट क्या बोल रहा है हमको? सेंटिमेंट हमको बोल रहा है कि लोग यूरो यूएसडी में यस, सो सेंटिमेंट हमको बोल रहा है कि यूरो यूएसडी में 62% लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग कर सकते हैं. तो दो जो हमारे स्टेप्स है, फंडामेंटल सेंटिमेंटल, दोनों मैच हो रहे हैं, तो यूरो यूएसडी को लॉन्ग किया जा सकता है. यस, सो अब आते हैं लेवल्स की तरफ. ठीक है, थर्ड स्टेप, यानी कि लेवल्स को ढूंढना. तो यूरो यूएसडी का लॉन्ग ट्रेड तो बनता ही है. अब लेवल्स एक बार देख लेते हैं, कहां से बने, कितना बने. सो यूरो यूएसडी 32
30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ मैं। यस, न्यूज़ आने के बाद, और मेरे हिसाब से ये लास्ट 15 मिनट्स, वो जो सवाल आया उसके बाद थोड़ा और, लेकिन फिर भी यूरो यूएसडी में एक पॉजिटिव मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। सो जब न्यूज़ आई यानी पॉलिसी आई, तब जो पॉइंट है दैट वाज आवर रेफरेंस पॉइंट। अब देखो यहाँ पर वेट तो करना ही पड़ेगा, इस लेवल पे एंट्री नहीं कर सकते, वी हैव टू वेट फॉर करेक्शन, वी हैव टू वेट फॉर कूल डाउन, इसको नीचे आने देना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। लेवल्स को देखते हैं चार्ट के ऊपर तो थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए हमको। सबसे पहले तो जब पॉलिसी का डिसीजन आया, पॉलिसी का डिसीजन कितने बजे आया था? 5:45। तो 5:45 जब डिसीजन आया, तब या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, तब क्या लेवल्स रहे होंगे, वो हमारे रेफरेंस पॉइंट रहता है। तो देखो ये जो है वो है 1.1428, और जब पॉलिसी स्टार्ट हुई तब भी जो लेवल है वो है 1.1441। सो मोटा मोटी ये इसके बीच में आप मान के पकड़ लो 1.1435 के आसपास, ये जो लेवल है वो हमारे रेफरेंस पॉइंट हो गए। तो यहाँ से आप एटलीस्ट 100 पिप्स का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द पॉलिसी। सो उससे थोड़ा भी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उतना मूव तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं बेस्ड ऑन द पॉलिसी, राइट। सो अब एंट्री कहाँ ली जाए, स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए, टारगेट क्या लिया जाए? तो मेरे हिसाब से प्राइसेस अभी ऑलमोस्ट न्यूज आने के बाद 50 पिप्स से ऊपर 50-55 पिप्स चल चुके हैं, तो जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम वेट करेंगे प्राइसेस को नीचे आने देने के लिए। कितना वेट करेंगे, थोड़ा चार्ट को एक बार नजर कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। मेरे ख्याल से ये जो लेवल है ये काइंड ऑफ सपोर्ट है, तो एक अच्छा लेवल है। मोटा मोटी ये लेवल जो है वो एक डिसेंट मोटा मोटी आई थिंक दिस इज अ डिसेंट लेवल। एग्जैक्ट पकड़ना मुश्किल है, बट यस। सो आई थिंक पहले जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि बाद में सपोर्ट का काम करेगा, और वहीं से देखो पॉलिसी के बाद वहीं से प्राइस ऊपर गया है, तो 1.1425 के आसपास का लेवल, यानी कि 1.1428 जब न्यूज आया था, या जब पॉलिसी का डिसीजन निकल के आया था, तब जो प्राइस था वो यही प्राइस था। तो यही प्राइस के आसपास एंट्री करनी चाहिए, यही अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से। इसका टारगेट कहाँ लिया जाए और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाए? तो मेरे ख्याल से इसका जो रीसेंट अभी जो हाई बना था यूरोप का, जो 1-2 महीने पहले, आई मीन रीसेंट एज इन की जब प्रीवियस हाई, स्विंग हाई, वो इधर है। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए आपका टारगेट, या इससे हल्का सा नीचे वाला ये लेवल, थोड़ी सेफ्टी आपको बेटर मिलेगी। तो ये होना चाहिए आपका, एक मिनट, यस, ये होना चाहिए आपका टारगेट, जो कि करीब करीब 125-130 पिप के आसपास आएगा आपके एंट्री के लेवल से, 125 पिप के आसपास, एंड या 120-22 पिप के आसपास, एंड आपका स्टॉप लॉस जो कि आता है यहाँ पे मोटा मोटी, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है ये आप यूज कर सकते हो एज सपोर्ट या स्टॉप लॉस। सो 100 पिप के आसपास का स्टॉप लॉस आएगा, 125 पिप्स का आपका टारगेट आएगा। अगर कोई स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रखना चाहे तो ये स्टॉप लॉस का लेवल यूज कर सकता है, जो कि कल ही लो बनाया है, कल या परसों ही लो बनाया था, 1.1359, ठीक है। तो अगर ये लेवल रखोगे आप तो 65 पिप्स के आसपास का आपका स्टॉप लॉस आएगा, 120 पिप के आसपास, 125 पिप के आसपास का आपका टारगेट आएगा, तो ऑलमोस्ट 1:2 हो जाएगा। तो ये दो लेवल है जो आप एसएल की तरह यूज कर सकते हो, और टारगेट का लेवल जो हमने बताया 1.1549, इस तरह से लेवल है अभी, इस तरह से अभी लेवल्स प्लेस्ड है, ठीक है। सो आई थिंक यूरो यूएसडी का ये ट्रेड क्लियर है, जल्दबाजी का करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब ये ट्रेड हम कब तक होल्ड कर सकते हैं? देखो 3 सिनेरियो होते हैं कोई भी ट्रेड के अंदर, विन, लूज एंड ड्रॉ, ठीक है। विन का मतलब आपका टारगेट आ जाए, तो अगर आपका टारगेट आ गया तो मतलब ट्रेड खत्म, या मान लो कि 100 पे प्राइस चल गया, उसके बाद नीचे आए तो भी हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा है लूज, लूज यानी कि आपका स्टॉप लॉस आ जाए, जो हमने स्टॉप लॉस के लेवल डिस्कस किया, अगर उसमें से कोई स्टॉप लॉस आ गया तो भी आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। एंड तीसरा है वो है ड्रॉ। ड्रॉ कब तक? यानी कि इतना ही या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई न्यूज आए तो हम मानेंगे उसको ड्रॉ। अब इतना इंपॉर्टेंट या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज, देखो इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई न्यूज होता नहीं है, ओके। तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल वन। अब इससे ज्यादा पावरफुल एक ही होता है, वो है जियोपॉलिटिकल इवेंट। तो अनलेस कि कोई इवेंट हो गया जियोपॉलिटिकल इवेंट, तो बात अलग है। अदरवाइज इसके जितना ही पावरफुल वो है यूएस का पॉलिसी। यूएस का पॉलिसी कब है?
So यूएस की पॉलिसी है 18th को, आई गेस, ठीक है। तो उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है, मतलब कोई बड़ा इवेंट नहीं है। 18th है ना, एक बार देख लेते हैं। सो 18th है यूरोप यूएस की पॉलिसी। सो यूएस की पॉलिसी 18th को है, तो इसका मतलब कि उससे पहले अच्छा, अभी हमारा इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी का एक डेडलाइन होता है मैक्सिमम 10 डेज, तो 10 दिन से ज्यादा हम ट्रेड होल्ड नहीं करते, ठीक है। तो आज तारीख है 5, तो 18 तक कोई होल्ड करने की जरूरत नहीं, 15 इज द डेडलाइन। तो आपका बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री पॉइंट। अगर ये टारगेट आ गया तो आपका ट्रेड लेने का चांस नहीं आया है। अगर प्राइस नीचे आया, रिट्रेसमेंट आया, आपको एंट्री लेने का मौका मिला तो आप एंट्री ले सकते हो। और आप अगर ट्रेड लेने के बाद आप ट्रेड कब तक होल्ड कर सकते हो, अगर टारगेट और स्टॉप लॉस आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो टिल 15, ठीक है। तो 15 तारीख तक आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। अब 15 तारीख को कौन सा वार है, 12, 13, सो आई गेस 14, 15 को संडे होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो आप मंडे, लेटेस्ट मंडे को आपको ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, अगर आप इस ट्रेड को ले जाते हो तो घर पे नेक्स्ट वीकेंड को, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ट्रेड्स आर प्लेस्ड एंड प्राइस इज प्लेस्ड, एंड ट्रेड जो है वो इस तरह से बन सकता है यहाँ पर। तो जल्दबाजी करने का कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि प्राइस इतना ऑलरेडी चल चुका है, तो आपको वेट ही करना चाहिए। यस, बट डायरेक्शन क्लियर है, हॉकिश है स्टेटमेंट। जो एक सवाल पूछा था, वो सवाल ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि डायरेक्शन जो है वो हॉकिश है, राइट। सो हम वेट करेंगे अपने लेवल्स को आने के लिए, एंड ये है So I think this is how मेरी स्क्रीन शेयर ही है ऑलरेडी। मीनवाइल एक बार चैट के मैसेजेस देख रहा हूँ। गुड इवनिंग, यस चंपक जी, गुड इवनिंग राजू भाई, important data ahead, okay. The patience of hearing this from you, thanks for the live session. So yeah, all welcome चंपक जी। यस, सेशन को तो सुनना ही पड़ेगा चंपक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। इन्फॉर्मेशन तो हमको वहीं से मिलेगी, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो डिसीजन कैसे लेंगे, डिसीजन में क्लैरिटी कैसे आएगी, राइट। सो एंड ब्लॉकिंग द बोर्ड व्यू, चंपक जी, सो बोर्ड व्यू आपके लिए नहीं है, बोर्ड व्यू यहाँ पर जो फिजिकली लोग बैठे हैं उनके लिए है। आपके लिए स्क्रीन शेयर किया है मैंने, तो आई थिंक स्क्रीन पे आई थिंक इट शुड बी विजिबल, एंड स्क्रीन शेयर करो, चार्ट शेयर, स्क्रीन शेयर करो। धर्मेश भाई, चार्ट प्रॉपर नहीं देखा तो चार्ट प्रॉपर देखना चाहिए। मेरे स्क्रीन पे क्लियरली मतलब दिख रहा है कि स्क्रीन शेयर्ड है। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपको स्क्रीन दिखनी चाहिए प्रॉपर। अब अगर ऐसा हो रहा है तो आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल, राइट। बट आई थिंक लेवल्स डिफाइन है। अगर आपको चार्ट या स्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं दिख रही है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है 1.1424 या 1428 के आसपास, आपका टारगेट बन रहा है 1.1549 के आसपास, आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 1.1359 के आसपास या फिर 1.1321 के आसपास, ठीक है। तो ये है आपके लेवल्स। एक बार मैं मार्क भी कर देता हूँ, शायद हो सकता है कि फॉन्ट छोटे हो इसलिए आपको ना दिख रहा हो। Buy at 1.14, 28 या 25, आपका टारगेट है 1.1549 एंड स्टॉप लॉस के दो लेवल मैंने आपको दोनों लेवल सजेस्ट किए हैं। आपको जिस दोनों में से जो भी लेवल्स कंफर्टेबल हो, अगर छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो 1.1359
और अगर ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो ये है आपका ट्रेड। अगर इंटरेस्टमेंट मिले तो ये आपको एंटर करना है 1.1428 या 1.1430 के आसपास। जल्दबाजी करने का कोई सेंस। 10 दिन तक वेट कर सकते हो। 10 दिन तक इस ट्रेड के लिए वेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के लेवल मैंने पहले 2 बोले थे, दूसरा लेवल भी मार्क कर देता हूं, आइदर दिस, और दूसरा लेवल आपका रहेगा 100 पिप्स के आसपास का स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर 65 पिप्स के आसपास भी स्टॉप लॉस लगा सकते। दोनों में से जो भी लेवल पे आप कंफर्टेबल हो, ये आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज कर सकते हो। Alright, so this is your trade and this is the analysis of policy. I hope कि आपको पॉलिसी के एनालिसिस में मजा आया होगा। चैट में कोई है तो देख लेते हैं एक बार। ओरा ओम एंट्री टीपीएसएल टाइपिंग करी दो सर। ठीक है, तो मैं टाइपिंग करी ना क्यों है, टाइपिंग मैंने कर दिया है, तो आई थिंक वो अभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। The interest rate is as per estimate, but because of hawkish statement, euro to remain bullish versus USD. जी हाँ चंपक जी, yes, that is the correct analysis, and we'll wait for the level. Yes, waiting for the level is good idea. ठीक है, so level के लिए wait करना चाहिए, वही एक अच्छा idea है. All right, yes. Any other doubt? We can wait for one more minute. एक और मिनट वेट करेंगे अगर आपका कोई और डाउट है तो, otherwise we will conclude the session. Yes, and Meet has constantly shared with you the comment section. Meet ने आपको constantly बोला है। Meet जो हमारा team member है, social media, YouTube is handling from the back end. So first of all, congratulations to Meet, is doing fantastic job. जो आपके लिए ये सारे videos वगैरह सब लेके आ रहा है, so fantastic job. Meet बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे कि लोगों को proper analysis हम discuss कर पा रहे हैं लोगों के साथ. And constantly Meet is sharing with you that share this with your traders friends as well. So जो भी traders आपके friend हैं उनके साथ भी share कीजिए, तो और हमको भी थोड़ा motivation मिलते रहेगा YouTube पे और live करने का. And we'll keep doing more and more live as much as possible. Thank you guys, thank you for joining, thank you for staying till now, and hope to see you in the next YouTube live. Till then, enjoy, bye bye, and have a profitable trading. Thank you.